morning, my dear students of class 3. This is your ma'am S.T. Joshi and welcome back to your English literature class. Welcome back to your English literature class. Today again we will be doing the lesson When Grandfather Tickled a Tiger by Ruskin Bond. Let's start. Okay, let's start further. Let's see what happened further. Okay, the nearest zoo was at Lucknow. Oh wow, this is a story in Lucknow, about Lucknow. Okay, have you seen the zoo in Lucknow? Yes, this is the same zoo that which Ruskin Bond, the writer of this story, is telling about. The nearest zoo was at Lucknow, some 200 miles away. Grandfather reserved a first class compartment on the train for himself and Timothy and set forth. Now, in the previously I told you that grandfather decided that he would transfer Timothy to a zoo, and he finally did. He finally decided that he will take Timothy to a zoo. So which was the zoo? The zoo was in Lucknow. It was a Lucknow zoo, and grandfather had to travel to Lucknow, so he reserved a first class compartment. उन्होंने ट्रेन में एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट को रिजर्व किया. What do you mean by reserved? पहले से उसको मतलब अपनी जगह को पहले से बना लिया ट्रेन में. To ask for a seat, table, room, etc. to be available for you at the future time. पहले से आप किसी होटल में कई बार लोग जाते हैं, पहले से बता देते हैं कि देखिए हम इस दिन आ रहे हैं, हमारे लिए टेबल तैयार होनी चाहिए, कोई और ना बैठा हो. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दूसरे शहर में जा रही हो, यू आर गोइंग टू अ डिफरेंट सिटी एंड यू हैव टू स्टे इन अ होटल, सो यू हैव टू रिजर्व अ रूम फॉर योर सेल्फ बिफोर हैंड, सो दैट ऐसा ना हो कि आप वहाँ पहुँचे और कोई रूम ही ना हो. इसलिए पहले से रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है. इन द सेम वे, grandfather reserved a first class compartment in the train for himself and Timothy and set forth. What do you mean by set forth? To start a journey. और वो निकल पड़े, वो निकल गए लखनऊ ज़ू के लिए ट्रेन में. और उन्होंने क्यों फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट को पूरा उन्होंने रिज़र्व कर लिया? ताकि किसी और जन को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो और टाइगर उसी एक कंपार्टमेंट में रहें, कोई और ना हो, ताकि वो टाइगर किसी को नुकसान ना पहुंचाए या लोग डरे नहीं या लोगों को देख के टाइगर परेशान ना हो. सो दैट इज़ वाई ही डिड दिस एंड दे सेट फॉर्थ. द लखनऊ ज़ू अथॉरिटीज़ वर ओनली too pleased to receive a well-fed tiger. They had very few tigers in the zoo. And when grandfather brought Timothy to this zoo, Lucknow Zoo, the zoo people were very happy to see a well-fed tiger. Well-fed means जिसको अच्छे से खिलाया गया हो. Have plenty of good food to eat. Well-fed means have plenty of good food to eat regularly. कि जैसे कि अच्छा से उसको, जब टाइगर को ज़ू वालों ने देखा होगा और वो अच्छा तंदुरुस्त लग रहा था, ओके, अच्छा हट्टा कट्टा, तो वो ये चीज़ देख के बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनके ज़ू में देयर वर नाउ वेरी फ्यू टाइगर्स लेफ्ट इन द लखनऊ ज़ू. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंड फर्दर. Grandfather had no opportunity to see how Timothy was getting on in his new home until about 6 months later, when he and grandmother visited relatives in Lucknow. Now, when grandfather brought Timothy to this zoo, when he sent him there, he came back, but after that he did not get any time to visit the zoo and go and see द टाइगर. अब क्या हुआ, जब ग्रैंडफादर ने वहाँ पे टिमिथी को रखवा दिया, वो वापस आ गए, उनको टाइम नहीं मिला कि वो जाके फिर से टाइगर को, टिमिथी को देखें. पर बहुत दिनों के बाद, आफ्टर मैनी डेज, about 6 months, after how many months? 6 months later, when he and grandmother visited relatives in Lucknow, when grandfather came to visit some relatives, अपने रिश्तेदारों से मिलने आए, grandfather went to the zoo and directly to Timothy. And what did grandfather do? He went to the zoo and he directly went to Timothy's cage. और वो टिमिथी के केज पे गए जहाँ पे वो पहले उसको छोड़ के आए थे. The tiger was there, क्राउच्ड इन अ कॉर्नर. क्राउच्ड मीन्स एकदम ऐसे गोल मोल होके जैसे टाइगर्स बैठते हैं ना. टू पुट वंस बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड बाय बेंडिंग द लेग्स अंडर द
बॉडी ऐसे एकदम दबा, पूरा ऐसे जैसे टाइगर्स बैठते क्राउच करके, अपने आप को ऐसे जोड़ के ज़मीन पे, वैसे वो बैठा हुआ था. ही वॉज फुल ग्रोन इन हिज मैग्निफिशेंट striped coat gleaming. What do you mean by magnificent? Or it means extremely attractive. Magnificent means extremely attractive. And what do you mean by gleaming? Gleaming means shining brightly. वो वहाँ crouch था, एक corner में बैठा हुआ था, and he was full grown, पूरे तरीके से बड़ा हो चुका था, and he was beautiful to look at, shine कर रहा था वो. Okay, and what did grandfather say? Hello Timothy, grandfather said. Timothy came up to grandfather. He allowed grandfather to put both arms about his head. Grandfather stroked the tiger's forehead. What happened now? Grandfather said, "Hello, Timothy." And Timothy came up to the grandfather. Timothy जो था वो grandfather के पास आया. He allowed grandfather to put both arms around his head. और उसने allow किया कि वो अपने हाथों को उसके सर पे ऐसे रख लें. Okay, and stroked the tiger. Stroke means जैसे stroke means to move your hand gently and slowly over an animal's fur or hair. Stroke जब हम dogs को छूते हैं, उनके सर पे ऐसे से उनको सहलाते हैं ना, that is known as stroked. Okay, to move your hand slowly and gently. Okay, around the tiger's forehead and tickled his ears. और कान में गुदगुदी करी. tickled means गुदगुदी करना. To move one's finger on a sensitive part of somebody's body in a way that makes him or his laugh. Him or her laugh. Okay, है ना, गुदगुदी करना. tickled means गुदगुदी करना. Each time Timothy growled, और जितनी बार grandfather ऐसे करते थे, जितनी बार उसको, whenever grandfather would tickle him, stroke him, okay, he would growl. What do you mean by growl? Growl means जैसे शेर आवाज़ निकालते हैं. Growl means जैसे शेर ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं. To make a low sound in the throat because of anger. है ना, जैसे शेर आवाज़ करता है वैसे उसने आवाज़ करी. When grandfather tickled him, his ears, grandfather gave him a smack. And when Timothy growled, grandfather smacked him. उन्होंने उसको स्मैक किया. What do you mean by smack? A sharp hit given with your open hand. है ना, ऐसे हल्के से ऐसे थप्पड़ सा मारा उसको. Okay, across his mouth. This had been his way of keeping the tiger quiet when he lived with us. और वो grandfather ऐसा ही करते थे पहले, जब टिमोथी उनके घर पे रहता था तो वो ऐसे ही उसके साथ खेलते थे. ऐसे smack, he would smack him, he would tickle him, he would stroke his head in the same way like he was doing now. Okay, now let's see what happened further. A number of people had gathered to watch Timothy and grandfather. And when grandfather was doing like this, many people came to see what was grandfather doing. और जब grandfather ऐसे करने लगे, बहुत से लोग आके उनको देखने लगे कि अरे ये आदमी क्या कर रहा है उसके साथ, टाइगर के साथ. उनको नहीं मालूम था कि वो उसी का टाइगर है. Okay, soon a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. I'm talking to Timothy, and grandfather. Weren't you here when I gave him to the zoo 6 months ago? Okay, और जब ये सब हो रहा था, when this was happening, when grandfather was stroking and tickling and smacking the tiger and touching him, everybody surrounded him, and because everybody was afraid, and suddenly the zookeeper, one of the keepers of the zoo, he came and he asked grandfather, what are you doing? उसने grandfather से कहा आप क्या कर रहे हैं, उसको क्यों छू रहे हैं? तो उसने कहा I am talking. Grandfather said I am talking to Timothy, and grandfather ने कहा मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ. I am talking to him. Weren't you here? क्या तुम यहाँ नहीं थे जब मैं 6 months पहले टिमोथी को यहाँ पर देकर गया था? He asked the zookeeper. Weren't you here when I came and gave Timothy to the zoo? क्या तुम यहाँ नहीं थे जब मैं पिछली बार आया था? I haven't been here very long, said the surprised keeper. Please continue your conversation. I have never been able to touch that tiger myself. I find him very bad-tempered. And what did the keeper say? He said, I haven't been here very long. मैं यहाँ पे बहुत समय से नहीं हूँ, said the surprised keeper. Surprised means वो बहुत
बहुत चक्का था, बहुत ही अमेज्ड था कि ये क्या हो रहा है. प्लीज़ कंटिन्यू. व्हाट डिड द जू कीपर से? प्लीज़ कंटिन्यू. आप करते रहिए जो आप कर रहे हैं, खेल रहे हैं. योर कॉन्वर्जेशन, अपनी बातों को, कॉन्वर्जेशन मीन्स बातें करना, टॉकिंग. ओके. आई हैव नेवर बीन एबल टू टच दैट टाइगर माई सेल्फ. और मैं उस टाइगर को कभी, मैंने उसको कभी छुआ नहीं है, बिकॉज आई फाइंड हिम वेरी बैड टेम्पर्ड. क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत बैड टेम्पर्ड. आई थिंक ही इज़ वेरी बैड टेम्पर्ड. बैड टेम्पर्ड मीन्स अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज एंग्री, ऑफन एंग्री, इन एन एंग्री मूड. ओके. एक बैड टेम्पर्ड पर्सन वो होता है जो हमेशा गुस्से में रहता है. ओके चिल्ड्रन, वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन टुमारो or in the next class. God bless you and take care, children.